लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। लटवा न्यूज के साथ एक विशेष बातचीत में सुतुंगा साइपुंग निर्वाचन क्षेत्र का विधायक संता मेरी सल्ला ने पूर्वी जाइटा हिल जिले के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 की खराब स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की महत्वपूर्ण महत्वों पर जोर दिया, जो मिजोरम, असम और त्रिपुरा सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में काम करता है। बातचीत के दौरान सेल्ला ने खुलासा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 बार सड़क का निरीक्षण किया था और इस गंभीर मुद्दे की समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसों से भी बातचीत की थी। उन्होंने फंडिंग सुरक्षित होने के बाद मरम्मत में तेजी लाने की NHAI के वादे के बावजूद भारत सरकार से फंड मिलने में देरी पर निराशा व्यक्त की। विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की गंभीर स्थिति पर अफसोस जताया, विशेष रूप से ट्रकों और वाहनों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं के संदर्भ में स्थानीय आबादी की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और यात्रियों की सुरक्षा पर प्रभाव पर जोर दिया। सेल्ला ने अपने मतदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हुए आश्वासन दिया कि वो सड़क की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। Yes, I know that this road is a very important road because it connects at least 3 states of the northeastern state, Mizoram, Assam and Tripura. So because this NH6, Narpo is my constituency, which is from Mankre to all the way to Maledon. So that stretch at the moment, it's very bad. I think it'll be around 60 kilometers at least. So I am very, I have been there for the inspection 2 times. I have been with the Nahai, I have spoken to them, I have spoken to the Deputy CM, Sir Preston Tinsong. He had raised these issues to them, he had spoken to them, and they said that since the government of India, they have not sent any funds at the moment. So Sir had particularly went by himself, our Honorable Deputy CM. He went there and he spoke to Nahai, and Nahai said that they are sending the funds to Meghalaya, and then they will start the work immediately. But it is a sad thing that till today nothing has been done, no work has been done. But I'm still pursuing and still pushing the Nahai and also Sir Preston to keep on pushing them, keep on talking to them so that they'll start the work immediately. Because you know, the road is so in a really bad condition. It's pathetic right now. Even the trucks that are falling and the small vehicles, and imagine who are sick, how will they reach the hospital? And then I'm very sad, and I don't know what to say also. But I travel over there every day, going from Shillong to Clariat every day. You can imagine what is the situation. I know the pain of my people, but I'm trying my level best to speak to these people so that they can speed up at the earliest and at the most, so that they'll do the work immediately. That is what we want from the Nahai. And I also urge them once again, if they're going to see this video, that they should speed up the work and do it immediately so that we'll not face this problem again and again. Thank you. लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।